हसीन बाबा। नजरें पड़ी जो तुम पर, नजरें पड़ी जो तुम पर, हटने का नाम ना ले, हटने का नाम ना ले। पलकों में डाल पर्दे, पलकों में डाल पर्दे, दिल में कहीं छिपा ले, दिल में कहीं छिपा ले। खो जाए तुझ में बाबा, खो जाए तुझ में बाबा। लौटी ना इस जहां में, लौटी ना इस जहां में, तुम सा हसीन बाबा। माशूक प्यारा है तू, माशूक प्यारा है तू, आशिक है सारी दुनिया, आशिक है सारी दुनिया। तू प्यार का समंदर, तू प्यार का समंदर, हम तो तुम्हारी नदियाँ, हम तो तुम्हारी नदियाँ। तुझ में समा के बाबा, तुझ में समा के बाबा, तुझ सा बने जहाँ में, तुझ सा बने जहाँ में, तुम सा हसीन बाबा। ये प्यार है रूहानी, ये प्यार है रूहानी, दुनिया क्या जाने इसको, दुनिया क्या जाने इसको। है इश्क ये हकीकी, है इश्क ये हकीकी, इसकी खबर है किसको, इसकी खबर है किसको। पल भर का वह भी झूठा, पल भर का वह भी झूठा, है प्यार इस जहां में, है प्यार इस जहां में, तुम सा हसीन बाबा कोई नहीं जहां में, कोई नहीं जहां। तुमने हंसी बनाया, तुमने हंसी बनाया, हमको भी इस जहां में, हमको भी इस जहां में, तुम सा हसीन बाबा, तुम सा हसीन बाबा, तुम सा। Is it on? Yeah. This one on, right?
Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Om Om Shanti. Shanti. आज हम देश विदेश के भाई बहनें मिलकर बसंत Today we from this country and abroad, we all together वैलेंटाइन डे celebrate Basant Panchami and celebrating Valentine. इस प्यारे दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। And therefore good wishes for all of you on this special day of the Valentine. आज के दिन Today's day, प्रकृति का पतझड़ स्वरूप पूरा होता है, the monsoon gets over नया स्वरूप खिल उठता है। and the new thing blossom. चारों ओर बसंत छा जाती है। Everywhere there will be a very beautiful atmosphere from now. नए फल फूल There will be new fruit, new flowers, भी बहुत खुशी से गीत गाते हैं। and even the birds sing very beautiful songs. विदेश में भी वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। People living abroad celebrate the Valentine Day. वो संत थे जिन्होंने आपसी प्यार को सहयोग दिया था। There were saints who gave love for one another, तो ये प्यार के दिन के रूप में मनाते हैं। and it is celebrated in the form of a love. और हमारे देश के लिए भी आज वही दिन है And for our country too, डे के रूप में मनाया जाता है, it is the same thing, and it is also called the Black Day. जिस दिन पुलवामा में अटैक हुआ था। On this day there was a Fulma attack 40 नौजवानों ने and 40 soldiers of our country, they died. तो हम सभी 1 मिनट And therefore साइलेंस में बैठेंगे, we will sit in silence for 1 minute शहीद जवानों को शांति की श्रद्धांजलि देंगे। and we will give peaceful tribute to those martyrs. ओम शांति। Om Shanti. आज 14 फरवरी 2024 के महावाक्य सुनेंगे। Today we will listen to great version प्यारे of 14 February 2024. आत्मनिरीक्षण की बातें बताई हैं।
in which Baba has spoken about का आधार how to remain in solitude and have the soul conscious stage. के गुण के बारे में बाबा ने बताया है। And Baba is also speaking about the virtues of being introverted. अंतर्मुखी बने, We have to become introverted, आत्माभिमानी बने become soul conscious, और हर बात में अपने कल्याण का ख्याल करें। and in every aspect think about our benefit. बाबा ने कहा है अगर आप घूमने फिरने जाते हो Baba says if you go on a tour, तो भी एकांत में विचार सागर मंथन sit in a solitude and churn the ocean of knowledge. अपने से पूछो, Ask yourself, सदा हर्षित रहते हैं? do I remain constantly cheerful? तो सुनते हैं आज के मधुर महावाक्य। So we will now listen to Baba's sweet version. हे मीठे बच्चे, Baba says, sweet children, अंतर्मुखी होकर become introverted अपने कल्याण का ख्याल करें। and think about benefiting yourselves. घूमने फिरने जाते हो When you go on tour, तो एकांत में विचार सागर मंथन करो। sit in solitude and churn the ocean of knowledge. अपने से पूछो, Ask yourself, हम सदा हर्षित रहते हैं? do I remain constantly cheerful? आज की मुरली से प्रश्न है, Question, रहम दिल बाप के बच्चों को अपने पर कौन सा रहम करना चाहिए? in which respect should you children of the merciful Father have mercy for yourselves? Answer, जैसे बाप को रहम पड़ता है just as the Father has mercy कि मेरे बच्चे कांटे से फूल बने, just as the Father has mercy in wanting his children to change from thorns into flowers, गुलगुल बनाने की कितनी मेहनत करते हैं। and the Father makes so much effort to make you children beautiful, तो बच्चों को भी अपने ऊपर तरस आना चाहिए। so you children too should feel mercy for yourselves. हम बाबा को बुलाते हैं, You call out to Baba, हे पतित पावन आओ, O purifier, come हमें फूल बनाओ। and make us into flowers. अब वो आए हैं, He has now come. तो क्या हम फूल नहीं बनेंगे? And so will you not become flowers? अपने आप से बात करो। You have to talk to yourself. रहम पड़े तो देही अभिमानी रहे। You have to talk to yourself. Will you not become flowers? If you have mercy for yourselves, जो you will remain soul conscious and imbibe everything that the Father tells you. ओम शांति। Om Shanti. ये तो बच्चे समझते हैं कि
कि ये बाप भी हैं, टीचर भी हैं, You children understand that that one is the father, teacher, and also the Sadguru. बाप बच्चों से पूछते हैं So the father asks you children, तुम जब यहाँ आते हो when you come here, तो इन लक्ष्मी नारायण के और सीढ़ी के चित्र को देखते हो do you look at those pictures of Lakshmi and Narayana in the ladder? जब दोनों को देखा जाता है तो एम ऑब्जेक्ट और सारा चक्र बुद्धि में आ जाता है When you look at those two, you see your aim and objective and the whole cycle से सीढ़ी as how you become deities and how you have continued to come down this ladder. चित्र देखते हैं तो When you look at the picture of the ladder, चित्र ये समझ में आ जाता है you will understand how you came down the ladder. ये ज्ञान तुम बच्चों को ही मिलता है Only you children receive this knowledge. तुम हो स्टूडेंट You are students. एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ा है Your aim and objective is in front of you. कोई भी आए तो उनको समझाओ When anyone comes, हमारा explain to him that this is your aim and objective. इस पढ़ाई से ये देवी देवता जाकर बनते Through this study, you become deities. फिर 84 जन्म की सीढ़ी उतरते हैं Then you come down the ladder of 84 births and you then have to repeat it. बहुत इजी नॉलेज है This knowledge is very easy. फिर भी पढ़ते पढ़ते नापास क्यों हो जाते But in spite of that, why do people fall or fail as they move along? सहज नॉलेज है Baba feels wonder that this is a very easy knowledge, but still, why one fails? उस जिस्मानी पढ़ाई से भी ये ईश्वरीय पढ़ाई बिल्कुल सहज है This godly study is absolutely easy compared to a worldly study. 80 जन्मों का चक्र बिल्कुल सामने खड़ा है Your aim and objective and the cycle of 84 births are right in front of you. विजिटिंग रूम में भी होने चाहिए Both these pictures should also be put up in the visitor's room. सर्विस करने के लिए सर्विस का हथियार भी चाहिए You also need materials for service in order to do service. में ही All the knowledge is included in these. ये पुरुषार्थ भी हम अभी करते हैं We are making this effort at this time. सतो प्रधान बनने के लिए बहुत मेहनत करनी है We have to make a lot of effort to become Sato Pradhan. सी मेहनत करनी है What effort we have to make? इसमें अंतर्मुखी होकर We have to remain introverted सागर मंथन and churn the ocean of knowledge. घूमने फिरने जाते हो When you go on tour, तो भी बुद्धि में यही होना चाहिए this is what you should have in your intellects. तो बाबा जानते हैं कि नंबरवार है Baba knows that this is a number wise. की तरह समझते हैं Some understand this very well. करते होंगे Some understand this very well. And so they must definitely be making effort for their own benefit. स्टूडेंट समझते हैं Each student understands अच्छा पढ़ते हैं that so and so is studying well. खुद नहीं पढ़ते हैं तो If you do not study, घाटा डालते you cause yourself a loss. अपने
अपने को तो कुछ लायक बनाना चाहिए ना। You should make yourselves worthy to some extent. भी स्टूडेंट हो, सो भी बेहद के बाप के। You are also students of the unlimited Father. ब्रह्मा भी पढ़ता है। This Brahma is also studying. ये लक्ष्मी नारायण है मर्तबा, That Lakshmi and Narayan is the status, 84 and the ladder is the cycle of 84 births. ये पहले नंबर का जन्म That is the first number birth, देवता, और ये लास्ट नंबर का जन्म। and this is the last number birth. तुम देवता बनते हो अंदर आने से ही। You are becoming deities. सेम ऑब्जेक्ट और सीढ़ी पर समझाओ। When people come, explain to them the pictures of your aim and objective in the ladder. इनके सामने बैठो, Come and sit in front of these every day, and you will remember this. चित्रों के सामने बैठो, लक्ष्य के सामने बैठो, Sit in front of the picture, तो हमें sit in front of aim and objective, and you will remember this. हमारी बुद्धि में है कि बेहद का बाप हमको समझा रहा You have it in your intellects that the unlimited Father is explaining to you. ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में भरपूर है। You have the full knowledge of the whole cycle, शीत रहना चाहिए। and so you should remain very cheerful. अपने से पूछना चाहिए, Ask yourself, हमारी वो अवस्था क्यों नहीं रहती? why am I not able to maintain that stage? क्या कारण है जो हर्षित रहने में रोला पड़ता है? What is the reason that there is a problem in remaining cheerful? क्या कारण होता है? What is the reason that there is a problem in remaining cheerful? उन्हों की बुद्धि में भी होगा कि ये हमारा भविष्य पद है। Those who create these pictures would have it in their intellects that that is their future status, ये that it is their aim and objective, and that it is a cycle of 84 births. है सहज राजयोग। It is remembered as easy Raj Yoga. रोज समझाते रहते हैं, Baba continues to explain to you every day. आपके बच्चे हो, You are the children of the unlimited Father, स्वर्ग का वर्षा जरूर लेना चाहिए। and so you should surely claim the inheritance of heaven. का भी राज समझाया है, And because the secrets of the whole cycle have been explained to you, करना पड़े। you should definitely remember them. पूरा ज्ञान याद रहना चाहिए। You have to remember the entire knowledge. साथ कौन सी धारणाएं चाहिए? And what inculcation you need. करने के मैनर्स भी अच्छे चाहिए। You also need good manners when speaking to people, चलन बहुत अच्छी चाहिए। and your behavior has to be very good. बातचीत करने के मैनर्स भी अच्छे चाहिए और चलन You need good manners when speaking to people. Your behavior has to be very good. चलते फिरते कामकाज करते बुद्धि में सिर्फ यही रहे। While moving along and doing all your work, it should remain in your intellects पास पढ़ने that you have come to the Father to study. ये ज्ञान ही तुमको साथ ले जाना है। You just have to take this knowledge with you. पढ़ाई तो सहज है, The study is easy. तो अगर पूरी रीति नहीं पढ़ेंगे If students don't study well, तो टीचर को जरूर ख्याल आएगा their teacher would think कि अगर क्लास में बहुत डल बच्चे होंगे
and that there are many dull children in his class, बदनाम होगा, and that his name will be defamed, इजाफा नहीं मिलेगा, and that he won't receive a prize. हमें एक्स्ट्रा इनाम नहीं मिलेगा, We will not get extra prize. गवर्नमेंट कुछ नहीं देगी. The government will not give him anything either. ये स्कूल है ना, This too is a school. इसमें इजाफा आदि की बात नहीं, Here there is no question of receiving a prize. भी पुरुषार्थ कराया जाता है. Nevertheless, you are inspired to make effort. बाबा ही हमें इतना पुरुषार्थ कराते हैं. Baba himself makes us to have so many effort. क्या क्या पुरुषार्थ कराते हैं. So just see what effort Baba wants us to make. सुधारो, You have to reform your behavior भी गुण धारण करो, and imbibe divine virtues. कैरेक्टर अच्छा बनाओ. And you also have to have a good character. बाप तो तुम्हारे कल्याण के लिए आए हैं, The Father has come to benefit you, श्रीमत पर चल नहीं सकते. but you are unable to follow the Father's Shrimad. एग्जाम्पल देते हैं. Baba gives an example. श्रीमत कहे कि यहाँ जाओ, If you are given Shrimad to go somewhere ये नहीं and you won't go there, कहेंगे यहाँ तो गर्मी है, you would say it is hot there यहाँ तो ठंडी है. or it is cold there. बाबा को पहचानते नहीं कि कौन हमको कहते हैं. And you don't recognize the fact that it is the Father who is telling you to do that. साधारण रथ ही बुद्धि में आता है, You only have this ordinary chariot in your intellects. आता ही नहीं, That Father doesn't enter your intellects at all. आता ही नहीं. You don't remember Shiv Baba at all. बड़े राजाओं का कितना सबको डर रहता है. Everyone is very much afraid of the big kings. नीति होती है ना. They have great authority. यहाँ तो बाबा कहते हैं मैं गरीब निवाज हूँ. Here the Father says, I am the Lord of the poor. रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को कोई नहीं जानता. No one knows me, the Creator, or the beginning, middle, and end of creation. कैसी कैसी बातें करते हैं. There are so many people. क्या क्या Look at what they talk about. ब्रह्मा बाबा के बारे में तो क्या क्या बातें करते थे. क्या Look at what they talked about Father Brahma. भगवान क्या चीज होती है ये भी जानते नहीं. They don't even know who God is. It is a wonder. बाबा कहते हैं The Father says, साधारण तन में आकर I enter an ordinary body रचयिता का और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देता हूँ. and I give you the introduction of myself and the beginning, middle, and end of creation. कितनी क्लियर. This ladder of 84 births is so clear. बाबा कहते हैं मैंने तुमको ये बनाया था अब फिर बना रहा हूँ. The Father says, I made you into that and I am now making you that once again. तुमको पत्थर बुद्धि किसने बनाया. You had divine intellects. आधा कल्प रावण So who then made you into those with stone intellects? से ही आए हो. For half a cycle you have continued to fall in the kingdom of Ravan. सतो प्रधान बनना है. You now definitely have to become Sato Pradhan from Tamo Pradhan. ही कहता है हमारी सद्बुद्धि भी हमें समझाती है. Your consciousness also says, बाबा है ही सत्य.
Your divine intellect also says that the Father is the truth. सत्य ही बताएंगे. He would definitely only tell you the truth. ये ब्रह्मा भी पढ़ते हैं. This Brahma is studying and you are also studying. ये कहते हैं मैं भी स्टूडेंट हूँ. He says, I am also a student पर अटेंशन देता हूँ. and I too pay attention to the study. एक्यूरेट कर्मातीत अवस्था तो अभी नहीं बनी है. And Baba says, I have not yet reached the accurate karmatit stage. भी बताते रहते. Baba is saying the result of his own. ऐसा कौन होगा जो इतना उच्च पद पाने के लिए पढ़ाई पर ध्यान नहीं देगा. Who would not pay attention to such a study to claim such a high status? ऐसा पद तो जरूर पाना चाहिए. Everyone would say, we should definitely claim such a status. समान बन. We all have the aim that we have to become equal to the Father. का लक्ष्य. Raise your hand, the one who are having this aim. Everybody are having this aim to become equal to the Father. ये ऐसा पद तो जरूर पाना चाहिए. We should definitely claim such a status. Everyone would say, बालक सो मालिक होने चाहिए. we are the children of the Father, and so we should definitely be the masters. होती ही है. However, there is always an up and down in studying. का एकदम सार मिला है. You have now received the very essence of knowledge. सार मिला है. You have now received the very essence of knowledge. शुरू में तो पुराना ही ज्ञान था. At the beginning, there was only old knowledge. समझते आए. Gradually, you continue to understand. अभी समझते हैं ज्ञान तो सचमुच अभी हमको मिलता है. You now understand that it is only now that you truly receive knowledge. आज मैं तुमको गुह्य गुह्य बातें The Father also says, today I am telling you the deepest things of all. No one can receive liberation in life instantly. उठा नहीं सकते. They cannot take all the knowledge at once. पहले ये सीढ़ी का चित्र थोड़े ही था. Earlier, you didn't have this picture of the ladder. ये मूल चित्र भी नहीं थे. In the very beginning, we didn't had these main pictures. बाबा ने बनवाए. It was later on that Baba made. लक्ष्मी नारायण का चित्र मम्मा के द्वारा बनवाया. The picture of Lakshmi Narayan was made through Mama, रतन दादा ने कल्प वृक्ष. and Vishwaratan Dada, he made the picture of the cycle, भाई जी ने सीढ़ी the Kalpa tree, and Brother Nirvair धीरे धीरे had the picture made of the picture of a ladder. अब समझते And gradually, everyone could understand this knowledge. ही स्वदर्शन चक्रधारी हैं. You now understand that you truly go around the cycle in that way. चक्र का राज We are spinners of the discus of self-realization. बाबा कहते हैं. Baba has explained to us souls बहुत सुख the secrets of the whole cycle. Baba comes and explains. की आकर तुमको स्वर्ग का मालिक बना. The Father says your religion is one that gives a lot of happiness. सुख का टाइम The Father Himself comes and makes you into the masters of heaven. और धर्म The time of happiness for others is now, when death is just ahead. जबकि मौत सामने खड़ा है. ये एरोप्लेन बिजलियां आदि पहले नहीं थी. Aeroplanes, electricity अभी did not exist previously. कितने बड़े बड़े For those people, it is as though it is heaven now. समझते They build so many big palaces. बहुत सुख है. They think that they have a lot of happiness now. लंदन में कितना जल्दी
पहुंच जाते हैं। They are able to go to London so quickly. बस यही स्वर्ग समझते हैं। They consider this to be heaven. अब उन्हों को जब कोई समझाए कि स्वर्ग तो सतयुग को कहा जाता है, They consider this old world to be heaven. माना केवल Someone has to explain to them that the golden age is called heaven. तन मन Here there are only materialistic happiness. संपूर्ण सुख, पवित्र निर्विकारी दुनिया उनको स्वर्ग The complete vicelessness is in heaven, and that is called the golden age. नरक में शरीर छोड़ा, The iron age would not be called heaven. नरक में ही लेंगे। If someone sheds his body in hell, he would certainly also take a rebirth in hell. Previously, you too didn't understand these things. राज्य आता You now understand them. गिरने लग जाते हैं। When the kingdom of Ravan begins, we begin to fall, and we then have all the vices. सारा ज्ञान मिला है। You have now received all of this knowledge, आद भी बहुत रॉयल होनी चाहिए। and so your behavior should be very royal. अभी तुम स्वर्ग से भी जास्ती वैल्यूएबल, You are even more valuable now than when you are in the golden age. है वो सारा The Father, who is the ocean of knowledge, gives you all of this knowledge at this time. ज्ञान और भक्ति को समझ न सके। I know human being can understand knowledge and devotion. दोनों को मिक्स कर दिया। They have mixed up the two. समझते हैं शास्त्र पढ़ना ये ज्ञान है, They think that reading the scriptures is the knowledge, भक्ति and that worshipping is the devotion. करना इसको भक्ति समझते। They think worshipping is the devotion. अब बाबा गुलगुल बनाने के लिए कितनी मेहनत करते। So the Father is now making so much effort to make you beautiful. 80 वर्ष हमारे पीछे मेहनत की है बाबा। From last 88 years, Baba is making effort. बच्चों को भी तरस आना चाहिए। You children should also feel mercy because you call out to Baba to come and make the impure ones pure फूल बना। and into flowers. अब बाबा आए हैं, Now the Father has come, अपने पर भी रहम करना। and so you should have mercy for yourselves. क्या हम ऐसे फूल नहीं बन सकते हैं? Can we not become such flowers? से बात कर, You have to talk to yourself. दूसरा कोई Can we not become such flowers? बुद्धि स्वीकार नहीं करेगी। If anybody else will explain to you, से बात you will not understand it, and therefore you have to talk to yourself. अब तक हम बाबा के दिल तख्त पर क्यों नहीं चढ़े? Talk to yourself, why have we not yet climbed onto Baba's heart throne? क्यों नहीं बने हैं? Why haven't we loved by the Father? जरूर अटेंशन नहीं देते हैं। You don't pay attention. बाबा तो बहुत अच्छा समझाते हैं, Baba explains very well. सिखाते हैं, Baba teaches us. एग्जाम्पल्स हमारे सामने रखते हैं, Baba keeps examples in front of us. टेंशन नहीं देते हैं। We don't pay attention. रहम दिल Baba is so merciful. बुलाते ही हैं पतित दुनिया में कि आकर पावन। You call out to the Father to come into the impure world and make you pure. रहम पड़ता है, ऐसे बच्चों को भी रहम पड़ना चाहिए। Just as the Father feels mercy, so you children should also feel mercy. गुरु के निंदक Otherwise, पाए, those who defame the Sadguru cannot claim a high status. में भी नहीं होगा कि सतगुरु कौन है। No one would even dreamt about who the Sadguru is. समझ लेते हैं कि कहाँ
गुरुजी नाराज ना हो जाए People believe that their guru might curse them and there would be a loss. कृपा न हो जाए बच्चा पैदा हुआ समझेंगे गुरु की कृपा हुई When they have a child, they believe that that was due to the blessing of their guru. That is a matter of temporary happiness. बच्चे अपने ऊपर रहम The father says, children, now have mercy for yourselves. देही अभिमानी बनो Become soul conscious, तो धारणा भी होंगी and you will also be able to imbibe. सब कुछ आत्मा ही करती है It is souls that do everything. को पढ़ाता हूँ I am teaching you souls. को भी आत्मा पक्का करो Also consider yourselves to be souls. And remember the Father too. आत्मा ही पढ़ती है Only the souls study. भी आत्मा को ही पढ़ाते Baba also teaches the souls. खुद को भी आत्मा पक्का करना You have to make yourself very firm that you are souls and remember the Father. याद नहीं करेंगे तो विकर्म कैसे विनाश If you don't remember the Father, how would your sins be absolved? जन्मों का बोझ जो सिर पर चढ़ा हुआ है वो तो उतारना है ना You have to remove the sins that are on your heads for 63 births. रहम And it is only possible when you have the remembrance of the Father. गाइड भी हैं ये You remember Him, O God, have mercy. The Father is the liberator and also the guide. This is also His incognito praise. मार्ग में तुम The Father comes and tells you everything. You used to remember Him on the path of devotion. टाइम पर ना Baba says, when I come, I definitely have to come at my own time. ऐसे जब चाहूं तब आ जाऊं ये तो नहीं है It is not that I come whenever I want. नूंद तो है नहीं It isn't fixed in the drama in this way. जब नूंद है तब आता है I come when it is fixed in the drama for me to come. नहीं आते However, I do not have such thoughts. बाबा को ख्याल आता है कि मैं जाऊं और बच्चों को सुखी करूं वो अभी ही आते Baba will come now to give you children happiness. तुमको पढ़ाने वाला वो बाप है It is that Father who is teaching you. This one is also studying with him. खता नहीं करते That one never makes any mistakes or causes sorrow for anyone. कोई भूल भी नहीं करते हैं कभी भी दुख भी नहीं That one never makes any mistakes or cause sorrow for anyone. नंबरवार टीचर All the teachers are number wise. वह सच्चा बाप तुमको सत्य ही सिखलाते That true Father is teaching you the truth. के बच्चे भी सच्चे होने चाहिए The children of the truth are true. फिर झूठे के बच्चे बनने से आगे Then by becoming children of the false one, you become false for half a cycle. भूल जाते You even forget the true Father. पहले पहले तो समझाओ ये सतयुगी नई दुनिया है First of all, कलयुगी ask whether this is the golden age, the new world, or the old world. से ये प्रश्न तो बहुत अच्छा पूछा People would then think that you ask very good questions. समय सभी में 5 विकार प्रवेश है At this time, there are the 5 vices in everyone. विकार सतयुग में होते नहीं In the golden age, the 5 vices don't exist. बात समझने की This is something very easy to understand. नहीं समझते However, वो प्रदर्शनी में if some of you don't understand, how can you explain at the exhibitions? इसके बदले Instead of doing service, सर्विस करके आएंगे you would come back after doing disservice. बाहर में जाकर सर्विस करना
मासी का घर नहीं To go out and do service is not like going to your auntie's home. Great understanding is required. की इस चलन से समझ जाते हैं। Baba understands everything from everyone's activities. फिर तो बाबा भी कहेंगे The Father is the Father, यही ड्रामा में and the Father would then also say, this was fixed in the drama. आता है तो ब्रह्मा कुमारी बहन का समझाना ठीक है। When anyone comes, it is fine for a Brahma Kumari to explain. नाम भी है ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। The very name is Brahma Kumari's Ishwariya Vishwavidyalaya. ब्रह्मा कुमारियों का होना है। It is the name of the Brahma Kumaris that will be glorified. इस समय सब पांच विकारों में हिरे हुए हैं। At this time, all are completely engrossed in the five vices. उन्हों को जाकर समझाना कितना मुश्किल होता है। It is so difficult to go and explain to them. समझते नहीं हैं। They don't understand anything. इतना कहेंगे They would just say that this knowledge is very good. खुद समझते नहीं। They don't understand anything themselves. पीछे विघ्न पड़ता रहता है। There continues to be obstacle after obstacle. रचनी पड़ती है। So you then also have to create those tactics. पहरा लगाओ। Have the police on security guard इंश्योर करा दो। and have the pictures insured. ये यज्ञ है इसमें विघ्न। This is a sacrificial fire, and so there will definitely be obstacles here. सारी पुरानी दुनिया इनमें स्वाहा होनी। The whole of the old world is to be sacrificed into it. Why else would it be called a sacrificial fire? इसका नाम ही है रुद्र ज्ञान यज्ञ। Everything has to be sacrificed into the sacrificial fire. शाला This is called the sacrificial fire of the knowledge of Rudra. तुम This is a Pathshala देवता and also a sacrificial fire. फिर ये सब कुछ इस यज्ञ में You study in a Pathshala and become deities, and then everything will be sacrificed into this sacrificial fire. प्रैक्टिस करते होंगे। Only those who continue to practice this every day would be able to explain. तो वे क्या बात कर If someone doesn't practice this, what would he be able to explain? मेरे पॉइंट्स भूल जाती है ना। You will continue to forget the points, अभ्यास होना चाहिए। and therefore you should have the practice how to explain. मनुष्यों के लिए स्वर्ग अभी है। For some people of the world, it is now heaven for a temporary period. स्वर्ग आधा कल्प के लिए होगा। For you, there will be heaven for half a cycle. ड्रामा बना हुआ है। This drama is predestined. युग और त्रेता युग में आधा कल्प स्वर्ग For a half a cycle, it is heaven in the golden and silver ages. होता है तो बड़ा वंडर लगता है। When you think about it, you are amazed by it. कहाँ वो आधा कल्प का स्वर्ग और कहाँ ये अल्पकाल का। There is the difference between the happiness of the half the cycle of golden age and the silver age, and the half the cycle of the iron age and the copper age. आदि की कोई The kingdom of Ravan is now ending, and the kingdom of Rama is being established. बड़ा वंडर खाते। There is no question of a battle in this. क्या क्या समझाया है ये ब्रह्मा भी बाप से ही सीख The Father has explained to you. समझाते रहे। This Brahma has also learned from the Father, बच्चियाँ भी and so he continues to explain to others. जो बहुतों का Daughters also explain. उन्हों को जरूर Those who benefit many others फल will definitely receive more fruit. बाकी पढ़े हुए के आगे अनपढ़े
भरी ढोएंगे। Those who haven't studied will have to bow down in front of those who have studied. समझाते रहते The Father tells you every day, कल्याण। benefit yourselves. इन चित्रों को सामने रखने से ही नशा कमरे में ये चित्र रख दिए हैं। This is why Baba has made these pictures put up in the rooms. सहज हैं। The aim and objective is so easy. डर्स भी बहुत A very good character is needed for this. जब एम ऑब्जेक्ट इतनी ऊंची है When your aim and objective is so elevated to become deities, भी हमारे बहुत अच्छे चाहिए। a very good character is needed for this. कैरेक्टर कैसा चाहिए? दिल साफ How very good character you need? हासिल When your heart is clean, your desires can be fulfilled. ची दिल से सोचेंगे, ठानेंगे, दृढ़ता करेंगे, बाबा का कहा हुआ मानेंगे तो जरूर If you truly accept what the Father says, then truly you can become deities. अच्छा, मीठे मीठे सीखी लधे बच्चों प्रति to the sweetest beloved long lost, I now found children, प्यार और गुड मॉर्निंग love, remembrance and good morning from the mother, father, Bab Dada. रूहानी बच्चों को The spiritual father says namaste to the spiritual children. बच्चों की रूहानी मात पिता बाप We spiritual children's love, remembrance, good morning and namaste to the spiritual father. मुरली का मुख्य सार Essence for dharana. के रूप में पहली पॉइंट First point, सदा स्मृति में रखना है हम बेहद बाप के स्टूडेंट हैं remain constantly aware that you are students of the unlimited Father, that God is teaching you. इसलिए अच्छी तरह पढ़कर And that you therefore have to study well बाला करना है and also glorify the Father's name. अपनी चलन बड़ी रॉयल रखनी है Let your behavior be very royal. दूसरी पॉइंट Second point, बाप समान रहम दिल बन become merciful like the Father से फूल बनना and make yourself into flower और दूसरों को फूल बनाना and also make others into flowers. अंतर्मुखी बनकर अपने व दूसरों के कल्याण का चिंतन करना है Become introverted and think about benefiting yourself and others. आज का प्यारे बाप दादा का वरदान Beloved Bab Dada's today's blessing. हलचल में दिल शिकस्त होने के बजाय बड़ी दिल रखने वाले May you be so courageous that in any fluctuation, instead of becoming disheartened, you have a big heart. भव कभी भी कोई
शारीरिक बीमारी हो, when you face a physical illness, का तूफान हो, there are storms in the mind. धन में या प्रवृत्ति में हलचल हो, When there is a financial upheaval सेवा में or an upheaval in your family or fluctuation in service, दिल शिकस्त नहीं बनो, never be disheartened by that upheaval or fluctuation. वाले बनो। Become one with a big heart. जब हिसाब किताब आ गया, When karmic accounts come, दर्द आ गया, when there is any pain, तो उससे सोच सोच कर दिल शिकस्त बन, दर्द को बढ़ाओ नहीं। do not dwell on it and thereby become disheartened and increase it, ऐसे but में have courage. जो हाय क्या करूं, Do not think, oh, what can I do now? नहीं हार। Do not lose courage. हिम्मतवान बनो तो Be courageous, मदद स्वतः, and you will automatically receive the Father's help. बाबा की मदद स्वतः मिलेगी। Be courageous, and you will automatically receive the Father's help. Slogan: की कमजोरी को देखने की आंखें बंद कर, Close your eyes to see anyone's weaknesses मन को अंतर्मुखी बनाओ। and make your mind introverted. आज का 14वां अव्यक्त इशारा है। Today's Avyakt signal: ब्रह्मा बाप ने सामना करने वाले को भी मधुरता, शुभ भावना, शुभ कामना से सहनशीलता का पाठ पढ़ाया। Father Brahma taught the lesson of tolerance with sweetness, good wishes, and pure feelings to those who opposed him. के मुख से भी ये Those who are opposing today will tomorrow ask for forgiveness. These words will emerge through their lips. Baba is Baba. सहनशीलता द्वारा This is known as making someone who has failed पास pass with tolerance विघ्न को पास, and to overcome the obstacle. तो कदम पर कदम रखना माना To place your footsteps on Baba's footsteps means to follow the Father, and that is to become equal to the Father. शांति। Om Shanti. ओम शांति। जैसा अभी हमें बताया गया, आज वैलेंटाइन डे भी है, बसंत पंचमी Today is the Valentine Day, आज सारा दिन Basant Panchami Day, करते हुए and while remembering Baba in this form, धन्यवाद we will thank Baba. बाबा, आपने हमारे जीवन में बसंत बहार ला दी है। Baba, you have made our life evergreen. रहेगा The classes will be in this way: 10 a.m. to 10:30 a.m. meditation, 10:30 a.m. to 11:30 a.m. class by Brother Mohan Singhal. The topic is Baba's hand and Baba's companionship. 11:30 a.m. to 12:30 p.m. class by Dr. Savita. The topic is सम्मान का व्यवहारिक to become equal to the Father. 5 बजे से 5:30 5 p.m. to 5:30 p.m. सारी क्लासेस रहेंगी। Classes will be in the Diamond Hall. बजे तक योग, There will be meditation. 5:30 p.m. to 6:30 p.m. जयपुर की सुषमा दीदी Sister Sushma Jaipur will give class. होगा। The topic is जीवन मुक्त स्थिति how to experience the 7:30 life free from bondage. भाई जी का क्लास होगा। 6:30 p.m. to 7:30 p.m. Class by Brother Raju. How to do service through बजे तक activities and behavior. And later on there will be meditation. जी के शताब्दी महोत्सव के लिए
On behalf of the centenary celebration of Dadi Ratan Moini, all the surrendered sisters and brothers are invited to have yoga on the stage. आज सुबह 9 बजे ट्रेनिंग Today morning at 9 a.m. in Training Center Hall number 1 at 9 हॉल नंबर 9 a.m. in Training Center Hall number 1, पाठशाला के Brahma Kumaris Patshala caretaker will having their training. भाई बहनें अवश्य All the teachers have to reach on time. चलाने वाले सभा में The one who are running the Patshala will raise your hand so that will come to know as how many there are. How many are running the Gita Patshala? Raise your hand. टीचर्स बहनें और सेंटर के समर्पित भाई जो 2000 Teachers from all the zone पहले and the surrendered brothers and sisters who have surrendered before 2013 इसमें सुबह 10 have to give their ID card in hall number 88 को बैच दिया and you will get the badge. टीचर्स बहनें ध्यान देंगी Teachers pay attention. सेवा केंद्रों को यज्ञ की The centers and the sub-centers ईमेल आईडी अभी तक प्राप्त नहीं हुई who hasn't got the email ID from the Yagya ऋषि भवन में in Rishi Bhavan, से you will have to contact Brother Shantanu, संस्कृति प्रभाग की सेवाओं को the Art and Culture Wing. मीटिंग आज प्रातः The meeting will be today at 9:30 a.m. in Training Center Hall number 5. रुचि लेने वाले सभी भाई बहनें Interested, please participate. सादर आमंत्रित हैं सभी भाई बहन बैठ जाएंगे आज की सभी सूचनाएं सुन करके जाएंगे सेंटर इंचार्ज बहनें और अकाउंट्स लिखने वाले Center in charge sisters and those who write the accounts, pay attention. ध्यान देंगे 18-19 फरवरी 2024 को सभी अकाउंट्स 18th, 19th February, के लिए अकाउंट्स the one who write accounts, they have the education training in a training center hall number 3. संबंधी नई बातें और कनेक्ट वन सॉफ्टवेयर के बारे में गहराई से समझाया There will be the news given about the softwares ऑफिस and other new informations about the accounts. सेवाओं के लिए श्री वामन For Mahashivratri, विशेष अंक there are new articles of Shivratri. के लिए डायमंड हॉल के गेट नंबर 0 के सामने आनंद भवन में In front of gate number 0, on the brother side, you have to एक या दो go to Anand Bhavan, Shiv Amantran office. सेवा के लिए रुकना चाहते हैं Those who want to be here for service करना सीखना चाहते and want to learn sound system operating, हैं योग के बाद स्टेज those brothers and sisters have to meet backstage. After Baba's meeting, all the brothers and sisters for 15 days or for 1 month who will be here for service, who wish to do service, have to get their names noted down. के लिए रुकना चाहते हैं राजस्थान जोन के सभी टीचर्स बहनों Rajasthan zone teachers will be having their meeting in Godlywood studio at 11 a.m. फिल्म के बुकिंग संबंधित विस्तृत जानकारी दी जाएगी ओम शांति मीडिया का सदस्य बनने के लिए In order to become the member of the Om Shanti Media, in order to have the renewal, will contact Om Shanti Media हॉस्पिटल के सामने in front of Everell the hospital in Om Shanti Media counter 2024 का कैलेंडर भी प्राप्त करें and can also attain the New Year calendar भी प्राप्त करें and can also get the article from there. राम श्लोक भाई जी क्या वक्त पूरा हुआ अब आपकी काम की चीजें जो दो बैठे हैं, पर्स तपस्वी मिले हैं जिनके भी खोए हैं वो स्टेज के पीछे आकर के ले सकते हैं अब खास विशेष आप सभी तपस्वी और योगी आत्माओं के लिए जो चले गए Now Brother Ram Shlok speaks. रास्ते में जाएंगे अभी मिलने वाला नहीं है बड़ी क्यू है तो खास आज रात्रि 2 बजे This is the information for the yogi and tapasvi souls. 10 बार से अधिक Tonight 2 a.m. to 5 a.m. आज की याद में you have the volcanic form of meditation. नहीं है लेकिन Baba always speaks about the pilgrimage of remembrance, इसीलिए आज ही रात्रि 2 बजे इस and therefore tonight 2 a.m. in this diamond hall you will be having volcanic form of meditation.
बाबा से एक दिन पहले और जो जाग चले One day गए हैं, before जो Baba नहीं आए comes, हैं, जो अपने you will have the volcanic form of meditation. बीके मल्टीमीडिया ऐप पर ऑन करेंगे 2 बजे रात को तो आपको If you own the multimedia app, वहाँ मिलेगा रात then you will get the online meditation program. जाने वाले चले गए नाश्ते में The one who will join the meditation tonight at 2 a.m., raise your hand. माताओं भाई Mothers, brothers, sisters, awaken, O brides, awaken. अरे सजनिया साजन 5000 साल के बाद आया है We are meeting the bridegroom after 5,000 years, and therefore we have to celebrate the Valentine Day हो जाएगा बाबा का tonight at 2 a.m. to 5 a.m. फिर से So have the volcanic form of meditation. Those who will come, raise your hand. You all should have an interest in doing tapasya. मुसीबत नहीं है मेहनत प्यार से कल का ओम शांति। जो भाई बहनें मर्जीवा भोग लगवाना चाहते हैं या खुशी का भोग, मृत्यु पश्चात का भोग, वो रुक्मिणी बहन से संपर्क करें। Those mothers and brothers are willing to offer bhog to Baba, the willing whilst alive bhog, आकर के अपना नाम लिखवा so they can get their names noted down backstage or can meet Sister Rukmini. 10 बजे दादी जी मीटिंग हॉल में रखी गई है। दो मिनट बाबा की याद में बैठ के जाएंगे। 2 minutes we will sit in Baba's remembrance. Om Shanti.